हेलो फ्रेंड्स, स्वागत जनाऊँ वर्तमान क्लास को। आशा करुँच तुम मैंने समस्ते बहुत भलरे थी। कालीर एग्जाम जदि मेन कहीं दे RHT रो तो आई होप कि समस्त एग्जाम बहुत भलसे जाइथिबो। ओके देन तो जदि मोर वॉइस क्लियर अच्छी एंड स्क्रीन मध्य विजिबल अच्छी देन मते फर्स्ट के कमेंट सेक्शन में जणै दियो। देन आमे माने क्लास टी को स्टार्ट करबा। ओके ठीक अच्छे। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। समस्त को प्रति नमस्कार। जल्दी जल्दी आसिकी क्लास रे जॉइन हो जाओ। लाइव आमे माने आसी सारे। ओके देन ठीक अच्छे। तो फास्ट क्वेश्चन टी चल देखा कौन रही। ओके तो पेडागोजी रो आ गोटे क्लास एटा रही जेटीपाई का बहुत। ओके ठीक अच्छे। तेबे चलो फास्ट क्वेश्चन टी देखा। ओके देख which one of these statements do you agree with? First statement गुडी को देखि नेबा। First statement रही कौन? A child fails because the government is not giving enough technological resources in schools. Second option रही a child's failure is primarily due to parents' education and economic status. A child's failure can be attributed directly to the genetic material he or she has acquired from his or her parents. And last option रही कौन ना a child's failure is a reflection on the system and its inability to respond to the child. कौन हम यार करेक्ट आंसर टी कौन हम रे यार करेक्ट आंसर कौन हम जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जणाई दियो। कौन हम ये पचारा एम को स्टेटमेंट सहित तुम्हें एग्री कर आउ बाकी गुड़ाक सहित करना। तो यार करेक्ट आंसर टी हूँ कौटा ना चाइल्ड्स फेलियर इज ए रिफ्लेक्शन ऑन द सिस्टम एंड इट्स इनएबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू द चाइल्ड। ठीक अच्छे। तो ऑप्शन डी हूँ यार करेक्ट आंसर। बुझेला वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन टी जीवा चलो। देन आमर क्वेश्चन रही teaching performed by a group of teacher is what? Team teaching, teacher teaching, written teaching, oral teaching. माने गोटे ग्रुप है कि टीचर माने जोठी किना टीचिंग दउथिबे सेटा को कोन कुहाजिबो? टीम टीचिंग कुहाजिबो, टीचर टीचिंग कुहाजिबो, रिटन टीचिंग कुहाजिबो कि ओरल टीचिंग कुहाजिबो? तो यार करेक्ट आंसर टी कोन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो समस्त आंसर प्रायतः ठीक रोची। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो टीम टीचिंग होची यार करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। जो माने आंसर देचो समानकर आंसर करेक्ट अछि। ओके वेरी गुड। देन क्वेश्चन टी देखो। देन हमर क्वेश्चन रही टीम टीचिंग वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रथम करिकी टीम टीचिंग टा कोठू स्टार्ट हेतिला? इंडिया, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन को देश रे प्रथम करिकी टीम टीचिंग स्टार्ट हेतिला? तो प्रथम करिकी मन रखिबो जे अमेरिका रु स्टार्ट हेतिला टीम टीचिंग। सो ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर। जो माने भी ऑप्शन सी आंसर देइछो समानकर आंसर करेक्ट अछि। वेरी गुड। देन क्वेश्चन टी देखा। नेक्स्ट जीवा हु डेवलप्ड ए टीचिंग मॉडल इन व्हिच टीचर वाज रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर? तो माने टीचर रो जागा नै गला कंप्यूटर। से टाइप रो जो टीचिंग टा रही से टीचिंग मॉडल टा को एमानक मध्यरु किए डेवलप करिसेंती? आजुएल, डेनियल डेविस, क्वींस, जॉन रेड्स किए एमानक मध्यरु से टीचिंग मॉडल टा को डेवलप करिसेंती जोथिरे कि टीचर रो जागा कंप्यूटर द्वारा रिप्लेस हेची? तो यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो ना डेनियल डेविस। ठीक अछि। ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समस्त आंसर करेक्ट अच्छी बट एटा डी हबनी ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन डी देखा। द कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल हैज बीन डेवलप्ड बाय काहंक द्वारा कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग जोटा कि हमर हाँ कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल टा काहंक द्वारा डेवलप होईची? गिलबर्ट ना स्टोलुरो एंड डेविस ना रॉबर्ट गैग्ने ना मैसनर? तो यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो? यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो रे? वेरी गुड। तो से होचंदी कोन ना स्टोलरो
एंड डैविस 1965 रे कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल को डेवलप करथिले। ठीक, देन क्वेश्चन देख, प्रोग्राम्ड लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय प्रोग्राम्ड लर्निंग को किए प्रोपाउंड करथिले बा काहंक द्वारा प्रोग्राम्ड लर्निंग टा लोकलोचन को आसीची? सिडनी प्रेसी, नॉर्मल ए क्रॉड, स्किनर, ईएल थर्नडाइक। कौन हबो एठी हबो माने कि ना स्किनर को द्वारा प्रोग्राम्ड लर्निंग बस स्किनर ही प्रोग्राम्ड लर्निंग को प्रोपाउंड करथिले। ओके, वेरी गुड। ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर। ठीक, देन क्वेश्चन चला देखिबा। इंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स, इंस्ट्रक्शन निज मध्य रे कोन इंक्लूड करि थाए? टीचिंग, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशंस, मेक लर्न ना एमन का मध्य रु किछि भी नहे। यार करेक्ट आंसर कोन हबरे? Instruction includes teaching, providing informations, make learn, none of the above. यार करेक्ट आंसर टी होची कोन? इंस्ट्रक्शन कोन? इंस्ट्रक्शन रे किछि इन्फॉर्मेशन तो थाए ना, सो ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर कोन ना प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशंस। ओके, नेक्स्ट देखिबा। देन क्वेश्चन रहिछि which one has been provided by programmed instruction? एमन का मध्यरु कोटा programmed which one has been provided by programmed instruction? programmed instruction द्वारा एमन का मध्यरु कोटा प्रोवाइड करा जाइछि? behavioral technology ना educational technology ना instructional technology ना instructional format। तो यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो? एठी देखो कौन हम यार करेक्ट आंसर? which one has been provided by programmed instruction? तो यार करेक्ट आंसर टी होची कोन ना एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ओके, ऑप्शन बी जो माने आंसर देछो सेमानकर आंसर करेक्ट अछि। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। देन क्वेश्चन टी देखिबा चला। देन हमर क्वेश्चन रहिछि द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग इज, प्रोग्राम्ड लर्निंग रो प्रिंसिपल टा कोन? प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर इन स्मॉल फ्रेम्स, continuing the learning process, continuous evaluation ना all of the above। कौन हम प्रोग्राम्ड लर्निंग रो प्रिंसिपल एमन को मध्य कोटा? all of the above। तो all of this गोटे होची कौन? प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर इन स्मॉल फ्रेम्स, कंटिन्यूइंग द लर्निंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस इवालुएशन, तीनटा जाक आसे जीव कोथरे प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग रे। ठीक, देन क्वेश्चन देखो। Then our question रहिछि which technology is used to achieve the educational aims in case these aims have not been achieved? Which technology is used to achieve the educational aims? एमन को मध्यरु को टेक्नोलॉजी टा यूज करा हेइ थाए एजुकेशनल एम को अचीव करेबा लागि इन द केस these aims have not been achieved? educational technology, instructional technology, behavioral technology ना instructional format। तो एठी हबो कोन करेक्ट आंसर टी? एठी यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ओके, ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक, देन क्वेश्चन टी देखो। देन हमर क्वेश्चन रहिछि कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन इंडिया इन को वर्ष कंप्यूटर डेवलप होता इंडिया रे? केबे ना 1961 मसीह रे। ठीक अछि। फादर ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोचेस, सॉफ्टवेयर अप्रोच रो जनक किए? लेथ, मेकिन, स्किनर ना जॉनथन। तो यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो? फादर ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच, फादर ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच कौन हबो यार करेक्ट आंसर टी? वेरी गुड, स्किनर होची यार करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी वाज फास्ट यूज्ड इन, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी प्रथम करिकी केबे यूज हेइतिला? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी टा 1925, 20, 30, 26 केबे यूज हेइतिला? प्रथम करिकी 1926 मसीह रे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी फर्स्टली यूज हेइतिला। ठीक अछि। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। किछि असुविधा अछि? सब क्लियर? ओके, देन देखो। देन हमर क्वेश्चन टी कोन अछि? टीम टीचिंग कोन एक्चुअली? टीम टीचिंग ऑप्शन ए कोन देछि? इन्वॉल्व्स टीम्स of teachers to optimize resources, interest and expertise. Option B रहिछि
Team teaching is a way out to manage with the shortage of teachers. Option C रही team teaching encourage healthy competition among teams of teachers in a school. Now team teaching involves small teams of students as per their ability. तो ये किना कौन हम यार करेक्ट आंसर देखिए कुह Team teaching involves teams of teachers to optimize resources, interest and expertise. तो ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर जो माने ऑप्शन ए आंसर देइछ समानकर आंसर करेक्ट अछि वेरी गुड ऑल ऑफ यू वेरी गुड राजेंद्र सुशांत शिवशंकर वेरी गुड ऑल ऑफ यू देन क्वेश्चन टी कोन रहिछि चल देखिबा देन हमर क्वेश्चन रहिछि द टीचिंग मेथड इन व्हिच more teachers make a plan of the subjects cooperatively carried out and always evaluate its effect on the students periodically is called audiovisual teaching, team teaching, visual teaching, visual teaching. तो देख ये पचारा जे गोटे टीचिंग मेथड जो थी कि दुई किंबा तहिंरु अधिक टीचर एका बेले मिसिकी किछि प्लान करिथांती गोटे सब्जेक्ट उपरे कोऑपरेटिवली सेटा को से प्लान टा को क्यारी करिथांती एवं इभालुएट करिथांती स्टूडेंट माननको पीरियडिकली तो सेई टाइप रो जो मेथड टी रहिछि टीम टीचिंग मेथड टी रहिछि सेटा को कोन कहा जाय थाए सेटा को कोन कहा जाय थाए रे वेरी गुड सेटा को टीम टीचिंग बोलिका कहा जाय थाए सो ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर ओके ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा In a computer-aided learning class, a teacher ran a program on screen about triangle and sat behind in class as an observer. This type of computer-aided learning based on programmed learning may be disadvantageous as option A. Students may feel lost due to absence of teacher-pupil interaction. Option B रही students get every information in sequential manner. Option C रही students get a chance to understand at their own pace. Option D रही students are responsible for their own learning. एठी यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो देखि कुह कोन हबो एठी करेक्ट आंसर टी वेरी गुड बहुत बढ़िया तो एठी यार करेक्ट आंसर टी हबो कोन स्टूडेंट्स गेट ए चांस टू अंडरस्टैंड एट देयर ओन पेस तो ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर ठीक ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर टीचिंग साइंस इन द प्रेजेंट एरा ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन टीम टीचिंग कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग ना ऑल ऑफ दिस एमानक मध्यरु को मेथडटा यूज होता है फॉर टीचिंग साइंस इन द प्रेजेंट एरा ऑफ टेक्नोलॉजी देख प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन ना टीम टीचिंग ना कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग ना ऑल ऑफ दिस कौन हम यार करेक्ट आंसर ए सब गुड़िक नहीं कि तो ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे वेरी गुड देन क्वेश्चन टी देख Which one of the following is not one of the advantages of team teaching method? एमान को मध्यरु team teaching method रो गोटे advantage नुहे कोटा बोलिका पचारिची It helps in sharing the best faculty by more students. It involves optimum use of teaching techniques and devices. It improves the teaching quality. It affects the socio-economic conditions of the pupils. कौन हबो एटी किना देखो correct answer टी Which one of the following is not one of the advantages of team teaching method? Team teaching method रे मान को मध्यरु कोटा गोटे advantage नुहे बोली पचारिची so एटा हबो कोन it helps in sharing the best faculty by more students so option A होची यार correct answer ठीक okay then question टी देखिबा जो माने ऑप्शन A आंसर देइछ समानकर आंसर करेक्ट अछि then रही क्वेश्चन डी if some students are not in a mood to study in the class you will जते बेले कि ना किछि स्टूडेंट मानकर इच्छा नथिबो क्लास रे कि ना पढिबा लागि कोन करबो force them to study tell those students to leave the class
warn them that they must study or else you will report the matter to the principal. Now tell them some interesting things related to their interest on your own subject. तो कौन हम यार करेक्ट आंसर वेरी गुड तो एटा हम कौन ना ऑप्शन डी हो यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे वेरी गुड ऑल ऑफ यू बहुत बढ़िया तो एटा तो अति इजी क्वेश्चन टा नहीं कि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग Which of the following is a teacher related factor affecting learning? देखिबा कौन रही फर्स्ट ऑप्शन रही proper sitting arrangement, option B availability of teaching learning resources, option C nature of the content or learning experiences, option D mastery over the subject matter. कौन हम ये करेक्ट आंसर टी कौन हम कौन पचारा which of the following is a teacher related factor affecting learning ठीक अच्छे तो यार करेक्ट आंसर टी हूँ कौन नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस ठीक ओके देन वेरी गुड देन क्वेश्चन टी देखिबा पेरेंट्स शुड प्ले ए डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रेन सिंपैथेटिक न्यूट्रल नेगेटिव प्रोएक्टिव तो पेरेंट्स कर कौन रोल रही थाए इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ ए यंग चिल्ड्रेन सो कौन हम यार करेक्ट आंसर ना प्रोएक्टिव थांती पेरेंट्स माने ठीक अच्छे तो ऑप्शन डी हो यार करेक्ट आंसर ओके वेरी गुड देन क्वेश्चन टी देखिबा देन हमर क्वेश्चन रही कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एज ए फॉलो ऑफ पियाजेट्स थ्योरी वाज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट observing children in action, creating game-like situations, creating moral dilemmas for people, talking to parents. एडी कौन हम कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट as a follow-up of Piaget's theory was a result of what? Observing children in action, na creating game-like situations, na creating moral dilemmas for people, na talking to parents. तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना क्रिएटिंग मोरल डिलेमास फॉर पीपल ठीक अच्छे वेरी गुड बहुत बढ़िया समस्त आंसर करेक्ट अच्छे बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग at which level in morality externally controlled pre-conventional level conventional level post conventional level none of the above according to Kohlberg at which level in morality externally controlled कोहलबर्ग मतरे को लेवल रे कि ना मोरालिटी टा एक्सटर्नली कंट्रोल होई थाए बोली का से पचारि ठीक अच्छे तो ये कि ना कौन हम प्री कन्वेंशनल लेवल ना कन्वेंशनल लेवल ना पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ना एमान का मध्य किछि भी नुहे तो यार करेक्ट आंसर टी होची कौन ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर प्री कन्वेंशनल लेवल ठीक अच्छे देन क्वेश्चन टी देखिबा Which one of the following is not a part of a stage proposed by Kohlberg in his theory of moral development? Self-interest and reward, relationship with others, social contract and social rights, following universal ethical principles. एमान का मध्यरो कोटा गोटे पार्ट नुह बोली पचारिछि is not a part of a stage proposed by Kohlberg. कोटा कोहलबर्गर जो स्टेजेस रही से न थाए इन हिज थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ओके सेल्फ इंटरेस्टेड एंड रिवार्ड ना रिलेशनशिप विद अदर्स ना सोशल कंट्रैक्ट एंड सोशल राइट्स ना फॉलोइंग यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स कौन हम यार करेक्ट आंसर देख ऑप्शन सी हो यार करेक्ट आंसर सोशल कंट्रैक्ट एंड सोशल राइट्स जदि एटा वाइगुड्स विषय में पचारि था देन होता ठीक ठीक अच्छे ओके देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन रही देखा समीरा रिटर्न्ड द बुक शी टुक फ्रॉम मालती's bag because she was afraid of being punished if she was caught. This illustrates Kohlberg's what? Pre-conventional label, conventional label, post-conventional label, pre-operational label. तो देख जिते बड़े माने समीरा रिटर्न कर देथिला से बुक टी को जोटा कि से मालतीर बैग रु नहीं जाइथिला डरिकी से पुणी थे रखी देथिला काले ताको पनिश करा जिवो सो एई प्रकार जो इलस्ट्रेशन टा रही कोहलबर्गर एटा
इलस्ट्रेट्स भितर किना जाई थाए प्री कन्वेंशनल लेवल रे, कन्वेंशनल लेवल रे, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल रे, प्री ऑपरेशनल लेवल रे। तो अगर यार करेक्ट आंसर कौन हम रे? वेरी गुड। तो यहाँ हम कौन प्री कन्वेंशनल लेवल, ऑप्शन ए हो यार करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे, प्री कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। Children in primary schools follow which of the following stages as proposed by Lawrence Kohlberg? देखिबा देख कोटा कोटा ठीक हम ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ना सोशल कंट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। चिल्ड्रेन इन प्राइमरी स्कूल कथा पचारिछि। ओके, children in primary schools follow which of the following stages as proposed by Lawrence Kohlberg? कौन हम यार करेक्ट आंसर? देख ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन जीव, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज जीव, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हेनी कि सोशल कंट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स हेनी। सो बी एंड ए, ऑप्शन ए हूँ यार करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ए एंड बी, बहुत बढ़िया। देन क्वेश्चन टी देखिबा, which of the following is a characteristic of Kohlberg stages of moral development? Universal sequences of stages across all cultures, stages proceed in non-hierarchic manner, variable sequence of stages, stages are isolated responses and not general pattern. कौन हबो? देख एमान को मध्यरो कोटा which of the following is a characteristic of Kohlberg stages of moral development? एमान को मध्यरो कोहलबर्ग कर जो मोराल डेवलपमेंट रो स्टेजेस रही समान को मध्यरो गोटे कैरेक्टरिस्टिक ए जो चार्टा रही ऑप्शन कोटा हबो? यूनिवर्सल सीक्वेंसेस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स, ना स्टेजेस प्रोसीड in non-hierarchic manner, na variable sequence of stages, na stages are isolated responses and not general pattern. कौन हम यार करेक्ट आंसर? समस्ते आंसर दबा लगी ट्राई करो। वेरी गुड, यूनिवर्सल सीक्वेंसेस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स, एटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक होची मोरल डेवलपमेंट जो कोहलबर्ग करो मोरल डेवलपमेंट रो गोटे स्टेज रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक। ठीक अछि, ओके देन। तो यूनिवर्सल सीक्वेंसेस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स होची। देख कल्चर कथा ही कोहलबर्ग कहिथिले ना, सो ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन डी देखो, व्हाट इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी? कोहलबर्ग को थ्योरी रो एमान को मध्य गोटे मेजर क्रिटिसिज्म क्रिटिसाइज करा जायतिला तांको थ्योरी को, तो एमान को मध्य मेजर क्रिटिसिज्म कोटा देखिबा। देखो फास्ट रही Kohlberg proposed a theory without any empirical basis. Kohlberg didn't give clear-cut stages of moral development. Kohlberg proposed that moral reasoning is developmental. Kohlberg didn't account for cultural differences in moral reasoning of men and women. कौन हम ये कि यार करेक्ट आंसर? What is a major criticism of Kohlberg's theory? एमान को मध्यरु गोटे मेजर क्रिटिसिज्म कोटा कोहलबर्ग थ्योरी रो, कोहलबर्ग proposed a theory without any empirical basis. Kohlberg didn't give clear-cut stages of moral development. Kohlberg proposed that moral reasoning is developmental. Now Kohlberg didn't account for cultural differences in moral reasoning of men and women. कोहलबर्ग करो जो थ्योरी रही ताको क्रिटिसाइज करा जायतिला कौन पाई सॉरी कौन पाई नहीं मेजर क्रिटिसिज्म गुड़ाक मध्यरु गोटे कोटा ना एटा हबो हमर कौन कोहलबर्ग डिडंट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग ऑफ मेन। तो ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आंसर देछ समानकर आंसर करेक्ट अछि। देन क्वेश्चन टी देखिबा चलो। देन हमर क्वेश्चन टी रहिछि ए चाइल्ड reasons you do this for me and I will do that for you.
In which stage of Kohlberg's moral reasoning would this child fall? तो गोटे चाइल्ड रो माने पिला बेले आमे देखिथिबा किंबा आमे मध्य पिला बेले करिचे जे तू मो पई एटा कर दे तो पई सेटा कर देबी तो एई टाइप रो जो स्टेज रहिची तो कोहलबर्गर जो मोराल रिजनिंग रही कोहलबर्गर मोराल रिजनिंग रो को स्टेज रे किना एटा आसी थाए ओके तो कौन हम द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस द पनिशमेंट एंड ओबेडिएंस ओरिएंटेशन तो ये कि यार करेक्ट आंसर टी कौन हम ये कि ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर गुड द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन तू मो पाई एटा कर देले मो तो पाई सेटा कर देबी तो सेटा को स्टेज रे कि आसी थाए कोहलबर्गर मोराल रिजनिंग रे ना द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन रे ठीक देन क्वेश्चन टी देखा देन क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड पेयर देखिबा कोडा कोडा ठीक से मैच करूची गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन रे वन अर्न्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस सेकंड ऑप्शन टी रही लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन ethical principles are self-chosen on the basis of the value of human rights social contract orientation physical consequences of an action determine whether it is good or bad punishment and obedience orientation laws are not fixed but can be changed for the good for society तो ये कि देख करेक्टली मान कोटा मैच करुच्ची सेटा होची गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन रे किना वन ऑन अप्रूवल बाय बीइंग नाइस ठीक अछि ओके तो ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन टी रहिची लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल अकाउंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म तो जेमते कि मु टिके आगु कहिथिली कोहलबर्गर जो मोराल रिजनिंग को बहु प्रकार रे क्रिटिसाइज करा जाइछि विभिन्न दिगरु ठीक अछि तो एमान को मध्यरु देखिबा कोटा सेही क्षेत्र रे किना गोटे क्रिटिसिज्म एमान को मध्यरु कोटा ठीक अछि बोलिका देखिबा कोहलबर्ग हैज डुप्लिकेटेड पियाजेट्स मेथड ऑफ अराइविंग एट हिज theoretical framework. Option B, Kohlberg has not given typical responses to each stage of moral reasoning. Kohlberg theory doesn't focus on children's responses. Kohlberg has studied primarily on a male sample. कौन हम ये कि ना ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर कोहलबर्ग has based his study primarily on a male sample ठीक अछि ओके तो ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन टी देखा नेक्स्ट हमरो क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग according to Kohlberg, in which stage of moral development people approach moral problems as members of society? According to Kohlberg को मतरे को स्टेज रे किना moral development रो को स्टेज रे people approach moral problems as members of society. कौन हबो ना स्टेज 4 रे ठीक अछि तो ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर समस्त आंसर दबा लगी ट्राई करो ठीक हो कि भूल हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एंड हिज वेरियस स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट प्रपोज्ड बाय हिम तांको द्वारा एमानको मध्यरु को स्टेटटा दिया जाई नाही बोलिका पचरा जाईछि तो देखिबा इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट्स यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स एटा तो आसीबो तुम माननको तो एटार करेक्ट आंसर टी कोन हबो ऑप्शन सी ठीक अछि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट्स ठीक ओके देन क्वेश्चन टी देखा द मोस्ट प्रिमिटिव सेंटिमेंट एक्सप्रेस्ड बाय द चाइल्ड इन द अर्ली चाइल्डहुड इज हिज लव फॉर हिज ओन सेल्फ हिज लव फॉर हिज टॉयज हिज लव फॉर हिज पेरेंट्स ना ऑल ऑफ द अबव देख माने जितेबले मोस्ट प्रिमिटिव सेंटिमेंट एक्सप्रेस्ड बाय द चाइल्ड इन अर्ली चाइल्डहुड सेटा हबो कोन हिज लव फॉर हिज ओन सेल्फ ठीक अछि तो ऑप्शन ए हो यार करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन टी कोन रहिछि अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग ए टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव गिवन इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग्स laying clear rules of behavior involving them in discussion on moral issues कौन हम ये कि यार करेक्ट आंसर
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देख ये किना हम कौन ना इनवॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इश्यूज। सो ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे। देन क्वेश्चन टी देख, Brandy is a 6-year old first grader. When you ask her about the rules in her classroom, she lists several, including listen to the teacher, be respectful to others, and keep your hands to yourself. You then ask her why the rules are important, and she responds, because teachers say so, and you don't want to get a note sent home to mom. Which level of moral development is Brandy demonstrating? तो ब्रांडी होची 6 year old रो गोटे फर्स्ट ग्रेडर से जणे। तो ताकू जदि पचरा गला when you ask her about the rules in her classroom, गोटे क्लासरूम रे किना थिबा जो रूल टा रही थे से कथा जदि ताकू पचरा गला से तारो आंसर रे देला माने तार रूल होची लिसन टू टीचर्स, बी रेस्पेक्टफुल टू अदर्स एंड कीप योर हैंड्स टू योरसेल्फ। तापर कि तुम्हें ताको पचार यू देन आस्क हर व्हाई द रूल्स आर इम्पोर्टेंट। तो ये सब रूल गुड़िक कौन पे इम्पोर्टेंट से पुणी थर आंसर देला बिकज टीचर से सो, कारण टीचर मैंने कहते एंड यू डोंट वांट टू गेट ए नोट सेंट होम टू मम। ठीक अच्छे। तो ये जो मोराल डेभलपमेंट रो टाइप रो जो लेवलटा रही एटा वर्तमान ब्रांडी को माने को मोराल डेभलपमेंट रो लेवलटा को डेमोन्स्ट्रेट करुची बोली एठी पचरा जाइची। ऑप्शन ए रही पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ऑटोनोमस मोरालिटी, सोशल रिलेशनल पर्सपेक्टिव ना कंक्रीट इंडिविजुअलिस्ट ओरिएंटेशन। कौन हम यार करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ठीक अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देन क्वेश्चन टी देखिबा कौन रही। Then our question रही in looking at Kohlberg's views of morality, Gilligan argues that men and women have different voices in relation to moral decision making. She labels these differences as the morality of dash for men and morality of dash for women. ठीक अच्छे। मोरालिटी मेन पाई कौन, मोरालिटी वोमेन पाई कि कौन? जस्टिस, केयरिंग, केयरिंग, जस्टिस, सुपीरियरिटी, इनफेरियोरिटी, गिविंग, रिसीविंग। कौन हम ये यार करेक्ट आंसर टी हम जस्टिस एंड केयरिंग। ओके, तो ऑप्शन ए हो यार करेक्ट आंसर। देन आमर क्वेश्चन रही द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन विच द चाइल्ड्स मोरालिटी इज कंट्रोल्ड बाय द फियर ऑफ पनिशमेंट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग डैश। जो माने डेवलपमेंट रे किना कौन होता है ना चाइल्ड रो मोरालिटीटा कंट्रोल होता है फियर एवं पनिशमेंट द्वारा। तो कोहलबर्ग मतरे से प्रकार रो लेवल को कौन कहा जाता है? मोरालिटी लेवल, कन्वेंशन मोरालिटी लेवल, सेल्फ एक्सेप्टेड मोरालिटी मोरल प्रिंसिपल लेवल ना प्री मोरल लेवल। तो ये किना कौन हम यार करेक्ट आंसर? ये हम प्री मोरल लेवल। ठीक अच्छे, वेरी गुड। देन क्वेश्चन देखिबा according to Kohlberg, thinking process involved in judgments about questions of right and wrong is called कोहलबर्ग को मतरे थिंकिंग प्रोसेस टा इन्वॉल्व करी थाए इन जजमेंट्स अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड ताकू कौन कहजिबो? कौन कहजिबो रे ना मोरल रीजनिंग बोलिका कहजिबो। सो ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन टी रही जयसिंह doesn't pay income tax despite legal procedures and expenses. He thinks that he cannot support a corrupt government which spends millions of rupees in building unnecessary dams. He is probable in which state of Kohlberg stages of moral डेवलपमेंट। तो यहाँ आ गोटे माने एग्जाम रे भी ये क्वेश्चन टा पर्टिकुलर आसी थिला। तो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम? कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पारा कन्वेंशनल। तो ये कि यार करेक्ट आंसर टी हम कौन ना पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक अच्छे, ऑप्शन बी हो यार करेक्ट आंसर। ओके ओके देन ठीक अच्छे। तो यहपरी भाव में जहाँ भी आज क्वेश्चन थिला से सब को आम मैंने डिस्कसन करने जदि आउ कहार किसी असुविधा रही तो मत पचारि पार नचेत एक सॉरी आमर क्लास टी को ये रखा। ओके
ठीक अच्छे ऑल ऑफ यू थैंक यू ऑल ओके देन तो वर्तमान क्लास टी रखुची थैंक यू।